राइट, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामर चिमा है। यस, काफ़ी लेट स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, 11:30 हो गए हैं। दिस इज़ द लेट नाइट स्ट्रीमिंग। गेम डेवलपमेंट स्ट्रीम है बेसिकली। आई एम गोना चेक आउट द गेम इंजन्स, द टू गेम इंजन्स। आज वैसे तो 5 गेम इंजन्स हैं जो कि मैंने सोचे हुए हैं कि इनमें मैं गेम्स बनाऊँ। ओके ओके, सो ओके, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड इट वेरी अब्रप्टली। लेट मी मेक इट क्लियर। The idea is जो कि यूनिटी हैव दिस वियर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग कि यूनिटी ने अजीब सी प्राइसिंग मॉडल सामने लेकर आया था, इंस्टॉल पर फीस, फीस पर इंस्टॉल, सॉरी। तो उसकी वजह से द इंटायर गेम डेवलपमेंट कम्युनिटी हैज़ शेकन अप। उसके बाद द यूनिटी गाइज रिवर्टेड इट बैक, और जॉन वेसिटियालो जो सीईओ है यूनिटी का, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। बट स्टिल आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट अदर गेम इंजन्स। मैंने थोड़े बहुत ट्राई किए हैं, बट दिस स्ट्रीम्स जो मैं सीरीज ऑफ स्ट्रीम्स, इट्स जस्ट वन ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। इसमें मैं ट्राई करने लगा हूँ यूनिटी और अनरियल को। यूनिटी, वेल, यूनिटी के बगैर, आई मीन यूनिटी से कंपेयर करना है सबको, तो डेफिनेटली यूनिटी इज समथिंग जो कि करना है। एंड द सेकंड अनरियल, उसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों गो डॉट फ्लैक्स भी हो जाएगा, और फिर स्ट्राइक को भी कवर करेंगे। तो ये 5 गेम इंजन है मेरी नज़र में जो कि आई थिंक टॉप नॉच है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई सेलेक्टेड दीज थ्री गाइस, इसके ये यूनिटी के काफ़ी क्लोज है, ठीक है ना। यूनिटी और अनरियल के काफ़ी क्लोज है, आई वुड से दैट, ठीक है। क्लोज, इट्स नॉट इवन अबाउट क्लोज, दे आर जस्ट गुड इंजन्स, ठीक है ना। ये पांचों, आई पर्सनली थिंक ये पांचों अच्छे इंजन हैं। हो सकता है कि ये जो दो इंजन हैं इसके बारे में इख्तलाफ हो, बट एटलीस्ट एवरी वन एग्रीज विद द विद द टॉप थ्री, राइट, द यूनिटी, अनरियल, गॉड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने गेम क्या बनानी है, जस्ट टू मेक क्लियर। मैंने बाय द वे आई हैव डिसाइडेड कि मैं सिटी बिल्डर गेम बनाऊंगा फॉर माई फर्स्ट कमर्शियल रिलीज, राइट। तो that is why the game is sort of close to my close to what uh, a city building game is supposed to have, more like resources वाला सीन भी है इसमें, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, टॉप डाउन 3D पर्सन, टॉप डाउन थर्ड पर्सन, 3D लिख दिया मैंने, इट शुड बी थर्ड पर्सन, राइट। थर्ड पर्सन मूवेबल वाई क्लिकिंग, ठीक है ना। जो थर्ड पर्सन होगा वो मूवेबल होगा क्लिक के जरिए, और आई गेस सरेंडर ही होगा मोस्ट लाइकली। और कैमरा उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, बल्कि कैमरा WASD से मूव होगा, ठीक है। प्लेयर जो है कलेक्ट करेगा सफियर्स को, और उन सफियर्स के जरिए वो 3 रंग के क्यूब्स बना सकेगा। और अगेन 3 रंग के क्यूब्स कैसे सेलेक्ट होंगे, थ्रू UI, राइट। तो UI की टेस्टिंग हो गई, पाथ फाइंडिंग की टेस्टिंग हो गई, बेसिक स्क्रिप्टिंग तो टेस्ट हो ही रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्लेयर शूट करेगा सफियर्स को। जब स्फीयर्स को शूट करेगा क्यूब्स में, तो क्यूब्स थोड़े से स्केल अप होंगे, राइट। तो दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। ये कोई खास, इट्स नॉट इवन अ गेम, इट्स जस्ट ए अ बंच ऑफ फीचर्स दैट आई वांट टू ट्राई आउट फॉर इन ऑल इंजन्स, ठीक है। सो अगेन इसमें कोई साउंड्स नहीं होंगे, बहुत बेसिक है। इसमें कोई मॉडल्स भी नहीं होंगे, नो साउंड्स, नो मॉडल्स और साउंड्स। थोड़े बहुत इसमें होंगे इफेक्ट्स, स्केल अप करेंगे, यू नो ट्वीन लर्प, वट एवर, जब क्यूब को मारेंगे, जब ये सफियर बेसिकली क्यूब को लगा तो स्केल अप होने का एक मज़ेदार इफेक्ट हो गया। फिर जब क्यूब बनाएंगे उस वक्त ये हल्का सा ट्वीन या लर्प होगा, और सफियर जो है वो अट्रैक्ट होंगे प्लेयर की तरफ। ये दो इफेक्ट्स छोटे मोटे डाल हैं, और फिर 3 विजुअल इफेक्ट भी बनाएंगे हर इंजन में, ठीक है ना। बिकॉज अगेन द आइडिया इज टू टेस्ट आउट वेदर द इंजन्स आर सुटेबल और नॉट, राइट। हालांकि ये टॉप 3 मैंने तीनों इस्तेमाल किए हैं, बट स्टिल आई रियली वांट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन थिंग कि हाउ आर दोज इंजन्स, और क्या वाकई इस इंजन में मज़ा आता है कि नहीं। तो starting with the Unity gaming, and by the way, I am seeing individuals watching me, and unfortunately मैंने Facebook नहीं खोली है। तो let me just quickly open Facebook, or yes, we are gonna use ChatGPT and Google for that, and then there's the background, background ambience a little bit. तो actually you know what, Facebook किसी मुझे समझदार बंदे ने कहा था कि don't open it publicly, तो I'm gonna open it on my separate window, right। और
अपनी कोई क्लिक सी के बाकी मेरी स्ट्रीम हो रही है कि नहीं? यस मेरी स्ट्रीम हो रही है। गुड थिंग कि किसी ने कमेंट नहीं किया, बच गए। आई कैन जस्ट डिक्रीज द क्वालिटी हेयर ताकि मैं मुसलसल बैकग्राउंड पे चलाए रखूँ इसको, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कोई कमेंट्स वगैरह पढ़ लूँ फेसबुक पे। यूट्यूब इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील क्योंकि आई थिंक यूट्यूब के चैट में पढ़ सकता हूँ इधर से डायरेक्टली। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन, यस वी विल यूज़ दीज टू टूल्स, और डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली गूगल से तलाश कर लेंगे हर इंजन की। बट लेट्स स्टार्ट आउट विद द यूनिटी बिकॉज यूनिटी वेल यूनिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। टू बी ऑनेस्ट आई एम इंजन एग्नोस्टिक, बट है एनीवेज, पता नहीं इंजन एग्नोस्टिक का मतलब भी पता हो सबको जो ये देख रहे हैं स्ट्रीम। yep, so the first thing that I'm gonna do is, well, आमतौर पे मैं URP यूज़ करता हूँ, but this time I'm just gonna go 3D core because I want to use Unity in a way के एक स्टैंडर्ड तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 3D जिसमें मैं इसको कहूँगा, okay, what should we call this, right? Project builder, project build base, right? So build base, I think project build base is nice name. और यस दिस इज़ अ मूवेबल विंडो ताकि मैं कभी भी चेंज कर सकूँ इसकी पोजीशन। दैट इज़ गुड, दैट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू कि मैं OBS में वो लगा देता कि कहाँ क्या होगा, OBS या प्रिज्म लाइव। वेल आई एम यूजिंग प्रिज्म लाइव राइट नाउ। लेट्स क्रिएट, सबसे पहले यूनिटी की गेम बनाएगी, ठीक है। और उसमें यूनिटी पे जस्ट मेक क्लियर कि यूनिटी का प्रोजेक्ट होगा एंड वी आर क्रिएटिंग इट एंड इट्स गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। दूसरी जो गेम हम बनाएंगे दैट विल बी ऑन अनरियल इंजन, ठीक है। तो देयर इज अनरियल इंजन, दो गेम्स आज बनाएंगे, यूनिटी में भी और अनरियल में भी। होपफुली बन जाए पूरी, अगर ना बने तो शायद मैं सारे काम ना कर पाऊँ जो मैंने यहाँ भूले, राइट। स्पेशली द विजुअल इफेक्ट वाला पार्ट जो कि अनरियल इंजन में करना मुश्किल है मेरे ख्याल से। बट यस, लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स होप कि चीज़ें हो जाए, ठीक है। नाउ हियर आई एम गोना से हाउ डू यू इवन क्रिएट अ प्रोजेक्ट? Damn it. So you will see me getting stuck like that every time, ठीक है ना। एंड जो कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट अगर किसी को पता है कि जो मैं इंजन यूज़ कर रहा हूँ वो कैसे यूज़ होता है। लेकिन अगर हेल्प मी आउट नहीं भी कर रहे तो इट्स फाइन, नो वरीज, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। लॉन्च करते हैं बस सीधा सीधा। हाँ, लॉन्च करने पर वो खुद पूछेगा कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है वगैरह वगैरह। यप यप, आई थॉट कि यहाँ प्लस होना चाहिए माई प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे करके, जैसे इंजन वर्जन्स पर है। दैट इट डजंट मेक सेंस, ये UI का मसला है, डेफिनेटली होना चाहिए बट हर एक का अपना सेंस होती है। तो किधर है, क्या किधर है? वेल, लॉन्च हुआ भी है क्या? आई डोंट नो। वेल, टू सी इफ इट्स लॉन्च आई विल जस्ट ओपन द टास्क मैनेजर, Unreal. Yeah, it's launching, I guess. So yep, these are big engines, Unity or Unreal, दोनों। Unity obviously is a smaller part, and then there you go, it's installing packages like crazy, crazy, ठीक है। ओके सो गो डॉट आज नहीं मैं कवर करूँगा, गो डॉट मोस्ट लाइकली कल या परसों कवर होगा, उम्मीद है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा देर है, मैं कोई वादे नहीं करना चाहता कि मैं लाजमी इस दिन आऊँगा और इस दिन मैं स्ट्रीमिंग करूँगा, राइट। तो इट्स गोना बी प्योर मी मेकिंग गेम्स इन द न्यू इंजन्स। आई थॉट इसकी स्ट्रीमिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये स्ट्रीम हो जाए तो ये वीडियो फुटेज पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट आउट करके इसमें से अपनी यूट्यूब की वीडियोस बना सकता हूँ जहाँ मैं डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ इंजन्स के, राइट। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि फ़ायदेमंद होगी दूसरों के लिए, बजाय कि मैं रिकॉर्ड करूँ वीडियोस एंड देन आई स्क्रैच माई हेड एंड सी कि कौन सा हिस्सा है कि जहाँ से निकालना। आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट स्ट्रीम इट। और स्ट्रीमिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आई मैं मेरे PC की स्पेस भी बच जाएगी बिकॉज अगेन सारा कुछ डायरेक्ट ऑनलाइन जा रहा है, इट्स नथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। मेरे रिडिकुलस चीज़ों को
सुनने का शुक्रिया आई गेस। लेट्स वेट अ लिटिल एंड सी के कब लॉन्च हो जाएगा यूनिटी। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम यार, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो लेट्स होप के चल जाए। वेल नहीं था पता इतना टाइम लेना यूनिटी में। इट्स कंपाइलिंग स्क्रिप्ट, क्या कर रहा है ये? आई थिंक दोनों नहीं से खोलने चाहिए, दैट वाज अ मिस्टेक आउट देयर। ये वाकई चल रहा है, क्या कर रहा है? आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे यूआरपी का करना चाहिए था, क्योंकि यूआरपी मैंने पहले भी किया हुआ है यार। चलो है, इट्स फाइन। ओपन अप। लेट्स वेट। ये मैं स्ट्रीमिंग बाय द वे 3 जगह कर रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड। दैट्स वेयर आई स्ट्रीम ऑलवेज। ठीक है, एंड वेल ये टाइम भी ऐसा है कि नोबडी रियली वॉचेस स्ट्रीम्स, तो लेट्स होप कि चल जाए। Oh yeah, there you go. Unreal is up now. Oh my god, dude. बहुत टाइम लेते हैं इंजन। वेरी नाइस, थैंक यू तलहा जावेद, मैंने पढ़ लिया फाइनली। तलहा वी आर ट्राइंग आउट इंजन्स, तो आज पहले 2 इंजन होंगे, कल या परसों या हो सकता है उसके बाद दूसरे 2 इंजन करेंगे और फिर तीसरा इंजन एंड पे होगा। तीसरा कौन सा इंजन है? स्ट्राइक, या हो सकता है 3 इंजन एक साथ हो जाए, ना नो। तो या क्या पता रोज एक एक इंजन हो, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि यूनिटी में बन जाए भी जाएगी पूरी गेम या नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो देयर यू गो हमारा यार आई हेट इट मैन, बहुत स्लो है। तो यार मैंने एक गलती की है, दोनों इंजन एक साथ नहीं होने चाहिए, राइट? दिस इज द टिपिकल सिनारियो। इनफैक्ट लेट्स मेक इट टिपिकल, लेट्स मेक इट रियल टिपिकल, दैट इज हाउ टिपिकल इट लुक्स लाइक। ठीक है, um, और यस लेट्स मेक द गेम। सबसे पहले और आई वुड लाइक, अच्छा मुझे पहले ही कंट्रोल्स पता है, वाओ कैसे पता है यार, आप तो नई इंजन ट्राई कर रहे थे राइट? ये पुराना इंजन है बिकॉज एंड आई ऑलरेडी नो दैट इंजन, राइट? तो खैर बाकी इंजन में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। तो प्लस सबसे पहले यू क्रिएट अ क्यूब, नो नो प्लेन, यू क्रिएट अ प्लेन एंड देयर यू गो, प्लेन आ गई। लेट्स सेट इट ऑन 0 0 0 एंड मेक इट 10 by 10। ओह नॉट दिस guy। ठीक है, and that is cool, we got a plane। I didn't like the color of it, so let's right click it, create a material। ठीक है, इसको कहेंगे ground and set it to green, color green and place it there। there you go। तो हमें ग्राउंड मिल गया है, इसका स्मूथनेस 0 कर देते हैं, मेटालिका अभी 0 रखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? वी नीड a player that's gonna be right click 3D a cylinder। ठीक है, oh not cylinder, capsule नहीं है, capsule, right? That's gonna be capsule and let's control click push करने से snap होता है। well there's no point of the snapping anyways, so 1 10, oh let's set it 0, let's be right। okay, तो camera कैसे setup होगा? to the right place, well I can लिटरली सेट द पोजीशन और रोटेशन, लेकिन मेरे पास तरीके हैं यूनिटी पे सेट करने के। ये मसला है यार, यूनिटी में हर चीज़ पहले ही पता है। तो लेट्स पुश इट अप बैक, लाइक यहाँ तक पुश करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ
the camera got set, and then change the FOV to less. And there you go, we have got a character जो कि मैं मूव कर सकता हूँ क्लिक दबाकर. And all right, to make it clear कि आपने by the way navigation mesh navigation बनाना है, उसके लिए मैं cubes लेकर आऊँगा. Let's set it back to 0 0 0. ओहो ये ऑइड जी ये क्या कर रहा है इधर. क्या अच्छा खैर. Hi, hello, Adil. Yes, by the way, Adil, let me just clear out that, we're gonna test out the 5 engines. Unity, Unreal, Godot, Flex, Stride. ठीक है. तो ये 5 इंजन हैं और हमने ये गेम बनानी है सब में, मतलब मैंने नॉट हमने, राइट. टॉप डाउन 30% मूवेबल वाया क्लिकिंग, मतलब पाथ फाइंडिंग उसमें टेस्ट हो जाएगी. कैमरा इज नॉट फॉलोइंग इट, WSD से मूव करेगा कैमरा. प्लेयर विल कलेक्ट स्फीयर्स विच विल बी यूज टू बिल्ड different 3 colors of cubes. UI भी आ जाएगा इसमें, ठीक है. प्लेयर कैन ऑल्सो शूट स्फीयर्स ऑन क्यूब्स टू स्केल देम अप. दैट्स इट. ये कोई गेम नहीं है, जस्ट अ बंच ऑफ फीचर्स. और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई पहली बात सिटी बिल्डिंग टाइप गेम मोस्ट लाइकली मैं बनाऊंगा अपनी पहली. और कम ऑन डिस्कॉर्ड, एक तो डिस्कॉर्ड डिस्टर्ब करने लग जाता है. ऑलराइट. और आई थिंक हाँ ये भी खुल गया, अनरियल खुल गया. इसको बाद में करते हैं, ठीक है. तो यस, लेट्स स्टार्ट विद टॉप डाउन, नहीं हाँ टॉप डाउन 30% मूवेबल वाया क्लिकिंग, ठीक है. ये सबसे पहले करते हैं. तो हाउ विल यू डू इट. वेल सबसे पहले मैं क्यूब बनाऊंगा जिससे मैं नेविगेशन तोड़ूंगा, राइट. बिकॉज नेविगेशन ब्रेक किए बगैर फायदा कोई नहीं इसको करने का. 0.5, पुश इट देयर एंड एक्सटेंड इट टू लाइक 8, no not 8, 1 8, right. And yeah, this it's all on ground. By the way vertex snap वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस, ठीक है. ज़्यादा कोई नहीं मैं करने लगा, जस्ट वांट टू मेक इट कि ये इस तरह हो जाए. मैं वर्टेक्स स्नैप कर सकता हूँ. दैट्स आल्सो समथिंग वी कैन टेस्ट इन अदर इंजन्स की वर्टेक्स स्नैप नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है. देखो ठीक है. या फिर आई कैन एक्चुअली बी एंड पुश देयर, दैट्स बेटर. ठीक है. अब व्हाट आई वांट इज अ नेविगेशन मैश, ठीक है ना. तो ये वॉल्स हैं बेसिकली, लेट्स कॉल देम वॉल्स क्विकली. एंड दे हैव अ बॉक्स कोलाइडर. ओके आई एम गोना पुश इट हियर, ठीक है. अब ये कैमरा मैं इसी तरह मूव करता रहूँगा इधर उधर, तो डोंट माइंड इट, ठीक है. नेविगेशन मैश, हाउ डू यू ब्रिंग अ नेविगेशन मैश. वेल क्रिएट एम्प्टी करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट आ गया, ऐड कंपोनेंट, नेविगेट, नैव नैव ओके सीरियसली. ओके सो बेसिकली इसका कोई पैकेज होगा यानी कि. ओके आई हेट यूनिटी, मानना पड़ेगा. तो खैर यूनिटी रजिस्ट्री, navigation mesh, nav. Okay, नेविगेशन मैच कहाँ है. अरे यार एक तो डिस्कॉर्ड रिगार्ड. ओके आई थिंक मुझे तो कभी बार दिल करता है डिस्कॉर्ड बंद ही कर दूं, बट देन मैं स्ट्रीमिंग डिस्कॉर्ड पे भी कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू डू. ओह यस, इन केस एवरीवन, अगर किसी को पता नहीं कि डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम कर रहा हूँ ये सब, ये देखो ठीक है ना. तो BSC गेम्स दैट्स माय सर्वर, ठीक है. उसमें मैं लाइव स्ट्रीम का एक बनाया हुआ है डिस्कॉर्ड चैनल कि जहाँ मैं लाइव कर रहा हूँ इसको, ठीक है. तो एनीवन कैन जॉइन इट, इट्स पब्लिक. लेकिन आई थिंक यू आई डोंट हैव, आई हैवंट गिवन द परमिशन कि अगला बंदा यहाँ स्पीक कर सकता है. तो यस इट्स गोना बी जस्ट मी डूइंग द वर्क हियर. ओके सो navigation, how do you find navigation. Yes, air navigation, high level mesh navs, yes exactly मुझे ये चाहिए. So I'll install that and close this and close this. Okay, जब ये install हो जाएगा, जो कि I'm not even sure कि install हो रहा है कि नहीं. हाँ okay, there's no loading bars जो मुझे बताएंगे कि install हो गया. हाँ, or do I have to keep the package manager open. There you go. Nice.
राइट. सो आपका नॉइस मैंने पढ़ लिया. नाइस. तो yep, there you go. And now right click, create. Oh yeah, there you go. AI navigation surface. ठीक है. So that's the first thing we need. And let's put zipper, and bake. And let's see show navigation mesh. And there you go. आपका navigation mesh तैयार हो गया. इतना ही सी बात थी. ठीक है. ये तो बेसिक था. और फिर ये कैप्सूल में हमने डालना है navigation agent. It's a navigation agent. Simple ऐसे. ठीक है. और by the way, it's let's call it player. Let's make it clear. और फिर यहाँ add component करते हैं. And okay, so now it's time for scripts. So what we can do is scripts, right click and create a folder called scripts. और इसके अंदर हम डालते हैं राइट क्लिक C# स्क्रिप्ट. और इसको कहते हैं, क्या कहें इसको, क्या कहें इसको, ओके, प्लेयर कंट्रोलर, because we're controlling the player. Yeah, here let's just keep things simple and call it player. And okay, it will load. La, 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 la. And then we also need another script called a cam controller, because camera को WSC से move करना है, if everyone knows that. And then we need a, बस ठीक है, इतने काफी है. ठीक है. So we pick this thing called oh not navigation mesh. अच्छा, सबसे पहले इधर कैम कंट्रोलर डालते हैं. क्लिक ड्रैग, इट्स वेरी सिंपल. प्लेयर के अंदर क्लिक ड्रैग करें प्लेयर को. इट्स रियली सिंपल, राइट. तो ये दो स्क्रिप्ट्स मैंने डाल दी. एंड नाउ टाइम टू ओपन विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. Okay, please open up. There you go. So we got the player को अब हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो वहाँ मूव करे प्लेयर. ठीक है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिंक बनाना पड़ेगा to the nav mesh agent, right, agent. और फिर स्टार्ट में हमें वो लेना पड़ेगा agent equals to get component nav mesh agent. वाओ, ये तो पहली सवाल है. ठीक है. तो ये एक ऐसे इंजन है जिसको मुझे पहले पता है, तो it's gonna be easy. Dot move, yep, move to where, okay, नहीं. Dot set, oh yes, set destination. ठीक है. set destination to क्या, ठीक है ना, to destination बतानी है हमने. What we're gonna do is if input dot mouse, if input dot get mouse button down 0. ठीक है. अगर क्लिक दबाया है तो फिर physics dot raycast. Okay, where do we want to raycast it, right? Origin direction. ठीक है ना. Okay. Origin is gonna be okay, so सबसे पहले मुझे कैमरा चाहिए होगा. देखो मैं यहीं स्ट्रगल करने लग गया. मेरा कैमरा मेरा, ठीक है. और just call it cam, and then you can just say here ऊपर cam equals to camera dot main, and then here we will say here नहीं, cam dot get world screen point to ray. Yes, that's what we need. या तो इससे हमें मिल जाएगी रे. तो उस रे को हम यहाँ से कट करके यहाँ डालते हैं. But we don't want it to be a max distance 1000.0f. Layer mask नहीं डालना. So it's a boolean, which is a problem because I want it to be boolean. Oh yes. Raycast hit info मुझे चाहिए. Okay, raycast info is behind this, so just click this and say raycast hit.
and then we can say here hit. ठीक है, ये तार जो है ना, this is a bit annoying. Got the hit from here. और उसके बाद set destination पे, well जब hit हो गया जो, you know, cam out hit basically. ठीक है, तो इससे मुझे रे कास्ट मिल जाएगा. एंड बाय द वे व्हाट इज इट गिविंग, इट्स अ बूलियन, राइट? इफ रे कास्ट वाकई ही हिट हुई है, फिर what we need to do is go ahead and say hit, right? Hit dot center, huh? Hit dot center dot point, yeah, same thing. ठीक है, cool, absolutely cool. हाँ, तो they should do it. बस, yep. hopefully let's hope for the best. ठीक है, स्पीड वगैरह सब सेट है. just go with the game, play it and see के navigation mesh चलता है कि नहीं. You click here and voila, it's working, right? Or you click here, so the navigation mesh working except कि इसकी speed बहुत ही slow है. let's set it to 20. Okay, इसकी acceleration slow actually, my bad. 16. Okay, it's acting like a ball. 360 yeah, please, no more angular PS. That was good. I don't know, weird movement है यार, बहुत ही weird movement है. 2 is the stop distance, stopping distance, not the stop distance. Oops. Okay, 2 is not working. Let's go for 6. That was much better. That's smoother and better. Speed को मेरे ख्याल से 10 कर देना चाहिए and acceleration को भी. That should work. Yes, and the stopping distance is 2 actually. So yeah, that is great. So now we got a navigation mesh जहाँ चीज़ों को move कर सकते हैं, and it has the क्या उसे कहते हैं, अब इसको कॉपी कर लेंगे कंपोनेंट को, ऑफ करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे वापस, ताकि you know everything is good and all. One thing's done. Let's move to the other thing. Movement हो गई, which top down third person clickable, you know, path finding हो गई. Camera is not following it and will move with via WST. ठीक है, so now it's time for the camera. So here's the camera. Now here's the problem with the camera. Camera का WST उस तरह से काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि well, if we click the camera, we'll see कि इसका ये actually काम करेगा, क्योंकि again we're not gonna use the local, we're gonna use the global stuff. इस तरह से काम करने लग जाएगा, no worries. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका एक स्पेसिफिक एंगल है जिसको प्रिजर्व करना है WST में मैंने. तो what am I gonna do is actually gonna say create empty. ठीक है, create empty किया और ओके, हाँ, create empty किया और जहाँ कैमरा देख रहा है लोकल में, let's set it to local. Yes, it has exact same turning. इसका मुझे चाहिए कि the x rotation है वो 0 कर दूँ. क्यों? Because again I actually wanna use the local movements stuff. तो what I want is इसको मैं कहूँ कैमरा पेरेंट और इसके अंदर मैं रखूँ कैमरा, एक्चुअली कैम कंट्रोलर, और इसके अंदर आपका जाता है कैमरा एंड दिस नो लॉन्गर हैज द कैम कंट्रोलर. उप्स, ठीक है. अब मैं इसके लोकल XYZ यूज करके नो X और Z से मूव करूंगा कैमरे को. What I want, and now I can edit the script and see here. It's gonna be extremely simple. Transform dot position plus equals to input dot get axis. Get axis horizontal or
let's just make a vector 3. Vector 3 nahi, let's actually transform dot right multiply by horizontal or plus transform dot forward multiply by dot get axis vertical, and that sort of does the job. अब मैं चाहता हूँ कि जो जितनी पूरी इक्वेशन है it should be multiplied by time dot delta time, right? And this way we have gotten the movement in just one line. ठीक है, float speed, and I want it to be a public, equals to, let's start with 10, so multiply by speed multiply by time. This should ensure कि सारा कुछ हो गया. Okay, and if I play it again, what happens is कि camera can move. ठीक है, जिस तरह से हम चाहते हैं कैमरा मूव करें. And let's actually set the speed to 40 ताकि थोड़ी speed तो आए. You know, I've clicked it and it's moving and the camera moves separately from it. ठीक है. But obviously the problem is the camera feels very smooth. I don't want that कि camera इस तरह से smooth move करे. तो हम क्या कर सकते हैं कि get axis raw, right? And again, that's the thing, right? Unity के बारे में मुझे पहले ही आता है सब. So it's easy. It's super easy. ठीक है. तो मज़ा तब आएगा ना जब दूसरे इंजन में ट्राई करूँगा. Right? So here my another camera is working the way I want कि you know arcade movement हो. मतलब oh shit, मैंने off क्यों कर दिया था. We should have just kept it playing. Yeah, that is good. I like it. And I can move the player and I can WSG से कैमरा मूव कर सकता हूँ. Right? Now ये तो था आसान हिस्से. अब अगला जो हिस्सा है वो ये कि मैं उसको पकड़ूँ, क्या उसे कहते हैं. एक मिनट, let me just open the Discord. I guess some individuals are here. Okay, so maybe I can unmute them or they just want to remain silent. Okay, अस्सलाम वालेकुम आदिल और यार. So anyways, let's move on to the next step. अब मैं चाहूँगा कि spheres बने. Spheres बनाऊँ मैं कुछ. तो right click 3D sphere, right? And that's it. That's one sphere right there. Just इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसमें. ठीक है. And call it is trigger because मैं चाहता हूँ spheres पकड़े जाए. And we can also have some tag on it कि जिससे हम देख के कह सकते हैं oh spheres के टक्कर गया. लेकिन do we need it? No, we don't need any tags. ठीक है. So ये एक sphere है. 2 3 4 5 6 7 8, right? Just spread them everywhere. इनको पकड़ना होगा. इनको पकड़ेंगे तो उसके बाद हम UI के ज़रिए क्यूज बना सकेंगे. Simple, nothing, not a big shrill. अच्छा, तो इनको पकड़ने का कोड प्लेयर के अंदर ही जाएगा क्योंकि प्लेयर ने इसको पकड़ना है. तो what I'm gonna do is I'm gonna say void on trigger enter, on trigger enter if other dot game object dot well I don't think कुछ करने की जरूरत है. हम बस कहेंगे other dot destroy. Let's destroy game object. ठीक है. Destroy करने के बाद what I want is कि let's keep a count in a public variable. Public int sphere count equals to 0, and then we can say here sphere count plus on every object जो कि हम पकड़ रहे हैं. And that's it. Does it work? I think इसके लिए एक UI होना चाहिए UI. So what I'm gonna do is right click, user interface. We need a text mesh pro UGUI import ETMP essentials. Another stupidity of Unity के text mesh pro यूज हुआ हुआ है. अपना इनका text का भी सिस्टम नहीं है. Wow, how cool is that? Oh, there you go. और ये भी ऑटोमेटिकली खुल गया for no reason. So 0, just add 0 here, and kind of a mess this is. Stiffer. Okay, I can't see the UI for some reason. So double click करते हैं. Let's see where it is in canvas. It's outside, right? Now to make it inside, पहली बात I think I want it in the middle. 0. इसका जो 0 no 1
एंड यस दैट्स इट। तो इसको 0 करते हैं इधर, एंड देयर यू गो, इट शुड बी इन द सेंटर। इसको बीच में डालो भैया, और इसको सिफर बोलो, दैट्स इट, सिफर। ठीक है, दैट्स इट, 0। अब मैं क्या चाहूँगा, इसको टेक्स्ट ही रखते हैं क्योंकि ओके देयर विल बी मोर टेक्स्ट, कहते हैं स्फीयर टेक्स्ट। ठीक है, फिर वी हैव दिस थिंग कॉल्ड प्लेयर। तो प्लेयर के अंदर इसका रेफरेंस होना चाहिए, टेक्स्ट मैच प्रो UGY टेक्स्ट नहीं स्फीयर काउंट टेक्स्ट। ठीक है, एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस गाय, कम ऑन यू गॉटा फिक्स योरसेल्फ। और फिर we can actually use, instead कि मैं यहाँ को public int which is fine I guess, what we should be doing is creating a private int actually, be careful, ये थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। private int sphere count equals to 0, right? Now you must be thinking मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अलग से क्यों बनाया है variable? Well, because this public is gonna be our setter getter, right? Get return underscore sphere count and set. In the set me, what we're gonna do is sphere count dot text equals to underscore sphere count dot to string. ठीक है, और and then okay, इधर लिखना पड़ेगा underscore sphere count equals to value, and that's it। ठीक है, इससे हमारा sphere count सेट हो गया, और ये प्राइवेट हो गया तो हम इसको देखेंगे नहीं, लेकिन हम पब्लिकली फिर भी यूज़ कर सकते हैं इसको जिस तरह से हम चाहते हैं। तो ये प्लस प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल अपडेट, लेकिन यप एवरीथिंग कूल। अब जाते हैं प्लेयर में, एंड यू नो व्हाट प्लेयर नीड्स राइट नाउ, प्लेयर नीड्स अ टेक्स्ट मैच प्रो, तो गिव इट अ टेक्स्ट मैच प्रो। oops, give it a text measure। oh okay, there's a lot of talk in the chat, sorry my bad, मैं पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूँ, गेम बनाऊँ या पढ़ूँ चैट? सही बात है, गोडॉट ट्राई ना करना, मेरा दिमाग खराब कर रहा है आदिल और गोडॉट दोनों ने। गोडॉट इज बाय द वे, गोडॉट है भी है लिस्ट में, ही आफ्टर यूनिटी एंड अनरियल आई एम शिफ्टिंग टू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज वियर, वन पीस इज वियर। देख अरे यार, नहीं can't even set say set in unity, set कर दिया। तो यार anyways, तो अब प्ले करते हैं बस। I'm back in the game, let's see if I click this, can I pick this? Oh what? Oh yes, I can't pick this because number one, player doesn't have a rigid body। yeah, rigid body and kinematic I guess, use gravity no, constraints freeze rotations, we don't need rotations there, and और क्या करना चाहिए, kinematic नहीं रखना है, I think it will work fine, so let's see। yep, and there you go, we can pick the spheres and we can move the camera so that अगर कोई नहीं पकड़ा तो वो ही पकड़ ले। perfect, right? Now what I would like is कि ये जो spheres हैं they get attracted towards broly speed run comments, मैं भी ऐसे गेम बनाऊंगा easy। okay, so the problem is कि the spheres are not attracting towards the player, right? How can we solve that? How can spheres get attracted to the player? Tough है ना, sounds like a मुश्किल चीज है। well there are ways to solve it। okay, so here you go, जो मेरे जहन में तरीका है, I'm gonna use that quickly। oh what, Unity stuck, hello Unity, चल गया, पता नहीं क्या हुआ था अचानक से। I think मुझे F कमांड दबाना चाहिए, that's much better, let's use the real ways of doing things, right? F से आप करीब चले जाते हो, फोकस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्फीयर जो हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन ईच स्फीयर हैज़ क्या, सारे स्फीयर्स को सिलेक्ट करते हैं, ये भी देखना है कि सारे स्फीयर सिलेक्ट हो सकेंगे या नहीं, और फिर यहाँ रेडियस 2 कर देते हैं, 2 3, राइट? तो मैंने रेडियस ज़्यादा कर दिया है, दिस साउंड्स लाइक अ वियर्ड थिंग कि मैंने रेडियस ज़्यादा क्यों किया, राइट? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कहाँ गया,
ये जो हाँ कि जब इंटर होगा तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इंटर वी गोना से स्टे, और डिस्ट्रॉय करने की बजाय व्हाट वी गोना डू इज अदर डॉट ऑब्जेक्ट dot transform dot position equals to vector 3 dot lerp, right? And transform dot lerp इसका किधर होना है, dot game object dot transform dot position comma transform dot position, right? That's how it should be. And time to delta time multiplied by lerp factor, attraction factor, right? Let's call this attraction factor and set here public float attraction factor equals to 10.0f, and this should bring them close. अब यहाँ कहेंगे if game object dot vector 3 dot distance dot game object dot transform dot position comma transform dot position is smaller than pick pick threshold इस, तो फिर उसके बाद now pick threshold distance is gonna be public float pick threshold distance is gonna be 2.0f, and we are good to go. Good to go. Let's do it. Okay, so let's see के काम करता है क्या नहीं. I guess ये स्फीयर्स हैं थोड़े बड़े हैं मेरे ख्याल से, इनका तो 3 तक तो करते हैं, ठीक है. और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा कर दिया, राइट. तो डिस्टेंस मैं अब यहाँ से करूँगा काम पेयर में जाकर. well I can say here 1 8, yeah, and that's it. Let's play the game, ठीक है. तो yes, attraction, we got attraction, right? So that's cool, and I can move the camera as well. Done, ठीक है. So and navigation mesh is also working, ठीक है. तो another feature done. तो attraction भी हो गई. Next, what is there? They will collect. Okay, spheres हो रही हैं collect. अब मुझे क्या करना है, build करने हैं 3 तरह के cubes. Whoa, that's a big deal, right? So how can you do this कि 3 तरह के cubes build हो. उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा पहले एक UI. तो UI gonna be very simple. gonna say buttons, 3 buttons बनाने हैं. Click button, right? यहाँ जाते हैं. Here's one button. जो कि 3 buttons बनाने हैं. तो well Unity has a lot of features, that's for sure. तो यहाँ create empty करते हैं. ओहो नहीं create empty सब में हो गया. नहीं, create empty parent, right? और इसको कहते हैं horizontal layout group, and then you sort of place it there. Cipher, right? Cipher, right? And there you go, you're good to go. अब well इसको कहेंगे white. This one is gonna be no white क्यों, no white, red, green, blue, ठीक है. Simple, ठीक है. Keeping things simple. Alright. अब what I would like is कि जब मैं रेड को क्लिक दबाऊँ तो उसके मुताबिक क्यूब्स कहीं भी लगाऊँ. इसमें प्लेयर का कोई सीन नहीं. यू कैन जस्ट क्लिक द क्यूब्स एनीवेयर. प्लेयर को वहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्यूब वहीं बन जाएगा रैंडमली. और उससे क्या होगा कि आपका एक खर्चा होगा सफियर का, ठीक है. तो बेसिकली सफियर जब होंगे तो आप बना सकोगे जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है. तो आई जस्ट वांट टू क्विकली मेक इट कि इनके नाम सही हो जाए. अगर नाम नहीं सही होंगे तो फिर बाद में मुश्किल होगी, राइट. ये तो हो गया जी. अब क्यूब्स के मुझे प्रीफैब बनाने पड़ेंगे. अगेन प्रीफैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या दूसरे इंजन में प्रीफैब होते हैं? आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दैट, राइट. तो प्रीफैब्स, राइट क्लिक. ओके, यहाँ नहीं क्रिएट करते प्रीफैब. लेट्स क्रिएट इट हियर. 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, ठीक है. लेट्स कॉल दिस द रेड क्यूब. तो ओके, एक तो ये बड़ा मसला है, ये यूनिटी आई गेस इसका हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी के लिए फ़िलहाल. तो इसको 4 4 4 इतना ही बड़े बड़े बनाएंगे.
2 right? 2 is good enough. ठीक है, and अब इसके लिए materials बनाने पड़ेंगे, and we have to make sure कि इसको एक और script देनी है. Right click and let's call this cube, and the cube script is there. ठीक है. The problem is कि है ये क्या हुआ. The problem is कि जब आप नया क्यूब बनाओगे तो नेविगेशन मैश को चेंज होना चाहिए उसके मुताबिक, राइट. और नेविगेशन मैश इज एक्चुअली नॉट चेंजिंग एट ऑल. जब आप नया क्यूब डालोगे तो नेविगेशन मैश को कहना पड़ेगा प्लीज चेंज योरसेल्फ, एंड दैट इज ट्रिकी. हाउ विल यू डू इट? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रंग तो चेंज करेगा. राइट क्लिक, duplicate it, call this red, duplicate it, call this green, and duplicate it again, call this blue, right? So green, red is gonna be red, you know, red, bright red, सारा कुछ bright. ऐसा करते हैं ये 200, not like real red. Let's keep it a subtle red. Green, same goes with green, 120, and same goes with blue. Amazing, keep it up. Thank you Ali, thank you. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें इंजन्स देख रहे हैं सारे लिए. वी आर नॉट डूइंग यूनिटी स्टफ. नज़र आ रहा है कि यूनिटी है, बट द आइडिया इज टू शिफ्ट एक्चुअली फ्रॉम द यूनिटी, राइट. तो यूनिटी इज दिस इंजन सॉर्ट ऑफ गोना एक्ट लाइक अ टेम्पलेट इंजन, और फिर से हम इंशाल्लाह अगले इंजन्स को देखेंगे. So here you go, red, and now I would like to use the prefab variant system as well, red being the basic one. Or let's quickly get a cube script inside of it, and do we want a rigid body here? I don't think so. बाद में देख लेंगे, ठीक है. प्रीफैब वेरिएंट सिस्टम ऐसे भी यूज करें, नो वरीज. तो प्रीफैब, लेट्स प्ले इट. देयर यू गो. नाउ वी आर not going to make duplicate, but right click, create prefab variant, right? And let's call this green. Right click, prefab variant. इतनी मुश्किल से मिलता है यार. Red, green, blue, ठीक है. Now open the green, और इसके अंदर जो material है that's going to change to be green, and open the blue, and that's going to change to blue. Yeah, that's it. Now we can see के ये सारे बराबर काम कर रहे हैं या कोई मसला है. Yeah. Everything's cool, you know. Yep, all good. People बना दी, we delete them. Okay, now we have to also make sure कि जिसको हम क्लिक कर रहे हैं that's actually this terrain, ठीक है ना. तो what we actually need to do is actually give it a tag. Tag is important, tagging system. Terrain, or terrain is a good thing to say. या फिर F2. I can't edit it. Okay, I got it. Minus करके let's call this plane. That's better. Okay, you get the name. नहीं है ये plane है. Yeah, so अब हमने क्या करना है क्या करना है. Okay, so we got scripts, player. First of all, we need to make sure कि यहाँ हम कहें कि if hit dot collider dot tag is not equals to plane, you gotta return. We don't need you anymore. अगर ये plane ना हुआ तो. Okay. Is this guy plane? No, it's not plane. So let's set it to plane. Okay. We have 3 buttons here. Great job. In fact, let's go and set the width a little less. इतनी ज़्यादा width रख के मैंने क्या चार डाला है, right? So
Oops. Huh? Oh, okay, it's controlled by this. Oh, it's keep width, height. So there you go. Done. Uh क्लिकिंग अब इनके क्लिक होने से मैं चाहता हूँ कि मैं क्यूब बनाने की मेरे पास खासियत आ जाए, एबिलिटी, जो कि आई थिंक इज द वर्क ऑफ द प्लेयर अगेन, राइट? इट्स समथिंग जो कि प्लेयर को ही करना चाहिए, या इट्स गोना गो इन द कैम कंट्रोलर ना, प्लेयर में ही रखते हैं, ठीक है? तो व्हाट आई एम गोना डू इज, okay, it is turning out to be a complex game. Public back to, no, not back to using Unity. It's just okay. Lee, this. You see this? You see this? सारे just try करने. And the kind of games that I am probably gonna make is a city building game. ठीक है? तो city building game के लिए basically मैं test कर रहा हूँ सारे engines को and see के which one is gonna work out and which one is the right choice, किसमें हम तेज़ी के साथ ये गेम बना सकते हैं, the same game, ठीक है? यही सेम गेम सारे इंजन में बनानी है, सारे सारे इंजन, ठीक है? गोडॉट पे नहीं आना प्लीज, क्यों? गोडॉट का क्या बुराई है? आई मीन आई एम टेस्टिंग इंजन यार, आने जाने वाली बात ही नहीं है, इंजन को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफा गो थ्रू करूँ प्रॉपरली, और प्रॉपरली कैसे गो थ्रू करूँगा? बाय मेकिंग दिस गेम, ठीक है ना? तो I really want to make an informed decision, and I think the best way to make an informed decision is to simply test out all the engines. और यूनिटी का वर्कफ्लो इज अ chaotic वर्कफ्लो इन ऑल ऑनेस्टी, अगर थोड़ा गौर किया जाए इस पे तो। है पब्लिक बुल इज क्यूब बिल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, इज बिल्डिंग क्यूब, इज बिल्डिंग इज इनफ, ठीक है ना? और फिर अगेन से पब्लिक इंट build index equals to -1. Okay, we don't need this building क्योंकि build index हम change कर सकते हैं, ठीक है? In fact, as a matter of fact, let's call this private. Again, the same technique. Do we need this technique? No, we don't. Okay. Public int build index. So we need function. Function चाहिए हमें, एक public function buttons के लिए. Public void build cube int index, ठीक है? और फिर हम यहाँ कहेंगे build index equals to index, जिसको भी क्लिक किया उसका इंडेक्स सेट हो जाएगा। एंड देन व्हाट आई वुड लाइक हियर, इसके प्रीफैब की लिस्ट हो इधर, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया है, आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज नाउ। हैं? क्या हो गया? मैंने भी गोडॉट इस्तेमाल किया, इट्स अ प्रीटी गुड इंजन। अच्छा, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट few prefabs and there you go, ठीक है? अब हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि जब क्लिक दबे, अगर बिल्ड इंडेक्स, इफ बिल्ड इंडेक्स इज हाँ इज इक्वल्स टू -1, फिर ये करो, एल्स अगर बिल्ड इंडेक्स -1 नहीं है तो बिल्ड इंडेक्स -1 हो जाएगा बनाने के बाद, अंडरस्कोर स्फीयर काउंट माइनस एक स्फीयर कम हो जाएगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट्स हैव गुड कॉस्ट हियर, माइनस इक्वल्स टू 2, और फिर यहाँ हम देंगे इफ अंडरस्कोर स्फीयर काउंट इज बिगर देन एंड इक्वल्स टू 2, आई मीन स्मॉलर देन 2, तो फिर रिटर्न यू डोंट सेट द इंडेक्स, ठीक है? माइनस इक्वल्स टू 2 एंड बिल्ड इंडेक्स -1 हो जाएगा और क्यूब बन जाएगा उधर, ठीक है ना? क्यूब कैसे बढ़ेगा? इंस्टेंशिएट से, इंस्टेंशिएट cube prefabs and brackets and build index, yeah, perfect. और यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्लिक दबा उधर, यहाँ क्लिक दबा उधर, wow, what is that? वेल एक चीज़ तो क्लियर है कि
we can just write it as a vector 3 dot up, and that should be 0 1 0, which is y परफेक्ट जगह पे है, एंड रोटेशन इसका इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो जहाँ क्लिक दबाया वहाँ क्यूब बन गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज, द अल्टीमेट प्रॉब्लम इज के प्राइवेट nav mesh builder, ठीक है। आई डोंट नो, अब प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। I need to build the mesh nav mesh again to make sure कि जो प्लेयर है वो क्यूब के अंदर से ना गुजरे जब क्लिक दबे तो, ठीक है। तो nav mesh सरफेस का मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो what I'm gonna do is, oh my god, it's gonna be messy. It's already getting messy, यार। तो कट करके just here, and you know, having a bit of spacing is always nice. you know, ये यूनिटी की छोटी मोटी चीज़ें जो कि बहुत असर देती हैं आपके पूरे प्रोसेस को। शिट, मैं क्या कर रहा था? nav mesh surface, yeah. So nav mesh surface का public nav mesh surface, you know, and then जब भी जैसे ही बनाया तो surface और update nav mesh, ठीक है। डेटा, क्या डेटा? मैं कोई डेटा नहीं देना। क्या डेटा चाहिए? अपडेट नहीं करना, फिर क्या करना है? डेटा, डेटा को क्या करना है? ओके, mesh data dot, okay, just call it null man, I have no data, just कर दो भाई। nav mesh data, okay, मुझे नहीं पता nav mesh data का। let's open, let's use nav mesh data, तो कैसे यूज करते हैं, what is this? nav mesh sir s है क्या ये? ओके, nm nav mesh data, इसी सरफेस का डेटा ले लिया। फिर यार इट्स अ लिटिल वियर्ड। nav mesh data, ठीक है। तो दिस शुड डू इट फास्ट, यहाँ इससे अपडेट हो जाएगा। फाइन, आई डोंट थिंक ये एबिलिटी गो डॉट में है ना। अब चलो है, इट्स ओके। बटन्स के फंक्शन नहीं सेट किए, कुछ भी नहीं किया, गेम बस चलाने की चलती है। तो प्लस और प्लेयर को ड्रैग किया और यहाँ प्लेयर के अंदर से fill cube with index, ठीक है ना। red for 0 1 2 0 1 2 और फिर प्लेयर में वापस जाते हैं। सर
face here, or it needs a 3. Okay, by the way, we have a trick for that. इसको lock करके we can just red green blue it like this, except कि मैं red चाहता हूँ ऊपर हो, green नीचे और blue ऐसे, ठीक है, and that's it, we're good to go. Red is 0, green is 1, blue is 2. Clear? Red is 0, green is 1, blue is 2. Perfect. So that's it. Let's play the game. So let's try blue. Okay. Blue. Huh, wrong place. Or okay, there are a lot of issues. There are a lot of issues. Okay. But I think all the issues have solutions. तो कोई बड़ी बात नहीं. Okay, मुझे देखना पड़ेगा. ChatGPT, take help from the ChatGPT this time. Yeah. How to check if the mouse is on top of UI. ठीक है. Yay, we got it. This thing. ठीक है. तो हम इसको यूज करेंगे, लेकिन yep, we can use that. All right, and then we can just say and then not. Perfect. लेकिन there are still some problems. मिसाल के तौर पे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि there is no event system. Oh, there is event system. Great. तो अब क्या चल जाए. Blue, green, red. Okay, nothing's happening. Perfect. But if I click there, nothing's happening. Perfect. अच्छा, लेकिन there are still a couple of issues. For instance, जो आपका पहला issue है वो है कि it collider blah 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 blah. It's getting confusing, huh? मसला क्या है मेरे साथ, मसला क्या है? मसला ये कि मैंने यहाँ सो बेसिकली यहाँ hit dot point last vector 3 है, ठीक है. Okay, so there are lots of issues. ये जो है इट्स नॉट ये पूरा ये होना चाहिए इधर, जो ये ब्रैकेट है हटाकर इसको इतने ले आओ. आहो, एन जो होना चाहिए है. और है क्या हो रहा है ये. ओ हाँ, दिस थिंग इज सपोज्ड टू बी हियर. डैंग इट, मेरा माइंड बंद होने लग गया लगता है. आई गेस आज अनरियल इंजन नहीं कवर होने लगा. आई कैन सी दैट एट लीस्ट.
Oh, the raycast is actually looking for sphere, whoa, trigger as well, which is obviously not the right way to do it. Okay, layer mask को छोड़ो, अगला हाँ, query figure interaction, ignore. So ignore it. This I want to give any layer mask. Damn it, I don't want to give any layer mask. Layer mask dot all. Is that something? Okay, so मैं quickly जाता हूँ इधर. How to get layer mask? How to get all layer masks without any wrapping? Unity inside script. Right, please just tell me this. Everything. Shukare, there's something called everything. But that's weird. Mask. How to skip layer mask parameter. Raycast function. Huh? How is that possible? ये क्या बोल रहा है? इस तरह हो जाता है तो हो जाओ ना, क्यों मुझे रोक रहे? ओके, मेरे ख्याल से डिस्टेंस शायद खत्म. लेट्स होप कि इस तरह चल जाए यार, कम ऑन. ओके, चलता है. एवरीथिंग वर्क्स. एवरीथिंग वर्क्स. गुड हो गया. ओके, इस पे नहीं रखूंगा क्योंकि वो नहीं है. बट इट्स वर्किंग एंड आई एम हैप्पी. एवरीथिंग वर्क्स. एवरीथिंग. ये जो चैट जीपीटी जो है ना, वाकई बहुत अजीब सा है. एंड इफ आई क्लिक दिस, यस आई कैन क्लिक एंड इट वर्क्स. लेकिन स्फीयर काउंट कम नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा. ठीक है. ओ या ये अनरियल इंजन, इस पे भी आते हैं, लेकिन पहले इसको पूरा कर लेते हैं. कैन आई क्लिक एंड डू स्नैप? नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने नहीं थे, अब आ गए इतने. तो कैन आई डू इट? यस आई कैन डू इट. Okay, good. I can blue and red, right? Buildings and stuff. इस तरह बना सकते हैं. And we get to go. And I can't go through them. जो कि amazing बात है. Right. So hey, एक मिनट, just a minute. That's okay. Can I click here? Can I go? What? Oh. Oh, you have seen this issue, right? तो basically problem ये है कि build करने के बाद बड़ा ही अजीब सा हिसाब है एक्चुअली. Let's actually do it here just to, एक दफ़ा स्टार्ट में हमेशा हो ताकि
मसला ना हो कोई भी। सो लेट्स होप कि इससे मसला हल हो जाए। यस, लेकिन ये क्यूब्स के साथ इसने क्या ज्यादती की है, क्यूब्स नहीं स्फीयर्स। तो I don't want spheres to be added in there. Why? Spheres तो trigger है। MS space weird stuff। इसमें इग्नोर कैसे करें हम? ओके, इग्नोर इसमें नहीं होगा क्योंकि वेल ट्रिगर्स का इग्नोर का ऑप्शन नहीं है, विच इज़ वेरी वियर्ड कि ट्रिगर्स का इग्नोर का ऑप्शन तो कम से कम दे देते भैया, अजीब मतलब। ओके चलो खैर, इट्स ओके, इट्स ओके, नो बिग डील। ठीक है, तो इन सब को हम एक वाटर में डाल देते हैं, पानी है ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ लेयर्स में एवरीथिंग नहीं करते, डिफ़ॉल्ट करते हैं सिर्फ। सिर्फ डिफ़ॉल्ट जाए और कोई भी ना जाए तो वाटर अब इंक्लूड नहीं होगा, एंड विच विल मेक श्योर के इट्स वर्किंग। यप, दैट्स इट, दैट्स एन इजी सोल्यूशन आउट। तो इसको क्लिक करते हैं हम। नाउ वी गोना सी द नेव मेश हियर, बिंगो, देखा नेव मेश बन गया। देयर यू गो, ग्रीन। मैं ग्रीन क्यों बना रहा हूँ, रेड भी बना लो भैया। सी के आ जाएगा इधर से या नहीं? वाह, कूल, आई आई रियली लाइक इट। मेरे ख्याल से इतनी ही बनानी चाहिए। आई नो मैंने कहा था शूटिंग हो, उससे बड़ा हो, टू इन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, करेंगे वो सब भी करेंगे, लेकिन आई थिंक वी आर गोना लीव इट हियर। ठीक है ना? इनफैक्ट लेट्स एक्चुअली डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, बिकॉज सेंसिबल तरीके से काम करना है, ऐसे थोड़ी ना। तो पार्ट वन, ठीक है, एंड दैट्स गोना बी पार्ट टू। So now this is now two-part thing. पार्ट वन तो मैंने कर लिया भाई, पार्ट वन पूरा हो गया। ठीक है, कैमरा इज नॉट फॉलोइंग ए WSD से ये 3 UI हैं वगैरह वगैरह वगैरह, डन। ठीक है, तो यूनिटी टुक अबाउट पता नहीं कितना टाइम, घंटा, घंटा तो लग ही गया ये करने में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी, इसको सेव करते हैं। ठीक है, दिस इज गुड, इसको क्लोज करते हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड बेस यूनिटी, ठीक है ना, एंड नाउ वी गोना गो एंड डू द सेम थिंग इन अनरियल। ब्लैंक प्रोजेक्ट, क्योंकि अगेन सारा कुछ, और C++ नहीं भैया, इट्स गोना बी प्रोजेक्ट बिल्ड बेस एंड अंडरस्कोर अनरियल। सबसे पहला मसला, यू कांट हैव अ बिग नेम, हाँ, दैट सक्स। तो चलो है, और यहाँ वी हैव टू मेक श्योर कि मैं इसको सही जगह पर सेव करूँ, हियर, ठीक है। ओके, मुझे शक ही पड़ रहा है कि ये सही जगह डालेंगे। ओके, जस्ट टू कंट्रोल जी काम करते हैं। ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि ये सही जगह है, मुझे बनाना पड़ेगा नया फोल्डर। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन कॉल इट व्हाटएवर लाइक, so project build base anyway. So there you go,
even though it's a approach build based Unreal, उधर तो project build based Unreal and it's gonna be blank and maximum quality, scalable, maximum. I think we should just set to scalable. Starter content, there's no need for that. Ray tracing, create. That's it. Unreal Engine. Time to jump into another game engine. ठीक है, तो Unreal Engine बड़ा मजे का है. We shouldn't underestimate Unreal Engine. Unreal Engine. कभी कभार दिल करता है इसको Unreal Engine बोलने का. But anyways. जब तक Unreal Engine खुलता है we can browse the internet. So funny man. So funny. बहुत मजा आ रहा है मुझे. हाँ, damn it. Recast function. Okay, Unreal Engine is open. ये weird opening है काफी Unreal Engine की. Hello Unreal Engine, are you good? ये क्या किया Unreal Engine ने? कैसा लेआउट है Unreal Engine का? या शायद ये मेरा लेआउट है शायद, लेकिन मैंने तो सब कुछ एक स्क्रीन में करना है. हाउ अबाउट के इसका जो लेआउट है डिफॉल्ट करें. और is there any way to set its layout to default editor layout? Great job. there you go. तो इस यार मैंने empty बोला, सब कुछ किया कि कुछ ना ही दे, लेकिन फिर भी इस चवल ने ये कुछ ना कुछ देना ही होता है. That's what Unreal Engine is about. Power, unlimited power, हाँ. तो here it's okay. Content है, content हाली content. बावजूद इसके I'm seeing a level. New world. Let's call this world. Let's do it for the sake of. Yeah, save it, open it, please. Thank you. So yeah, there's something called Alt tab. Oh no, sorry, Alt space. Space, control space. I think ये बड़ा मजे का सीन है, ये जो Unreal Engine में ये ऑप्शन भी है. That is really convenient. Yes, we have the world, लेकिन it's empty. It's totally empty. So how can we make it so it's not empty anymore? Right. Okay, it's confusing at the start. Basically मैं ऐड करना चाहता हूँ एक all classes के अंदर there's a thing called कहाँ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं. Basically there's a window called environment light mixer. ठीक है ना? और minimal create. That's it. That does the job. ठीक है, ये मिनिमल है इसका. कैन यू सी दैट? तो उसके बाद हमें चाहिए एक प्लेन. शेप्स के अंदर वी हैव दिस थिंग कॉल्ड प्लेन, राइट? एंड
लेट्स गो टू डिटेल्स और उसमें स्केल ज़रा लॉक करके बढ़ा किया जाए टू 10। ठीक है, दैट्स कूल। वो स्पीड तेज है बहुत, स्पीड बहुत तेज है भैया, स्पीड कम कर ले प्लीज, थैंक यू। ओके, ओह कंट्रोल बटन से दबा के मूव करना। ओके, ऑल्ट से यू कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, तो मेरे पास प्लेन आ गया एंड एज ऑलवेज आई वांट द प्लेन टू बी ग्रीन। ग्रीन, तो control spacebar, content comes in, right click, and let's go for material, and call it game material। क्यों अब इसको मैं game material क्यों कह रहा हूँ, weird thing। और इसको ओपन करते हैं, ओपन हो जा। यार डबल क्लिक दबाया है, मैंने डबल क्लिक दबाया, यकीन करो मैंने डबल क्लिक दबाया। That's the experience Unreal provides। ओपन हो जा, there you go। तो या अनरेला इंजन मानते हो ना, अनरेला है फिर। तो पैरामीटर्स लेट्स, ओके अभी के लिए फिलहाल 1 S1 S, राइट क्लिक S, हाँ ऐसे, सॉरी ऐसे करना था, ठीक है। तो ओके बट दैट्स नॉट द पैरामीटर वी वांट, राइट। C1, ओह C से कमेंट आता है। वेल कलर, जस्ट राइट डाउन कलर, जिंदगी आसान करो, कलर बोलो। वर्टेक्स कलर, हाँ वेक्टर 3, constant 3 vector, okay that works, and convert it to parameter and call this color। That's the only thing I care about, okay। Metallic, S click, it's no, I don't want parameters anymore, please no parameters please। इसको remove किया, oh remove भी नहीं हो रहा, how to remove this parameter। okay, how to remove parameters। ओके ये क्या है, ओके सेव करने के बाद शायद यू नो इट विल से कि हाँ पैरामीटर रिमूव कर सकते हैं ना, नहीं इट्स वियर्ड है। तो यहाँ वाइट कलर करना बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो वाइट ही होना चाहिए। ओह हाँ हो गया रिमूव, गुड। तो अब फ्लोट, ओके स्केलर, पैरामीटर नहीं चाहिए हमें, हमें जस्ट जस्ट अ वैल्यू, वेक्टर 1 भैया कुछ तो दे दो। क्या करूँ इसको, नहीं पैरामीटर नहीं चाहिए भाई, पैरामीटर नहीं चाहिए। फ्लोट, ओ कांस्टेंट लिखना होता है, ओके। तो कांस्टेंट या ओए इट्स वियर्ड यार, मतलब कांस्टेंट का नेम में से निकल गया था। स्पेकुलर और ये रफनेस 1 करनी है बाय डिफॉल्ट, आई वांट एनी रफनेस एंड दैट्स इट, सेव इट। सो मटेरियल हो गया सेव, एंड नाउ कंट्रोल स्पेस, राइट क्लिक, create instance, create material instance, yeah, and call this red, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, green, blue,
ग्राउंड, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं तो ग्राउंड बनाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो रेड वन नीड्स टू बी रेड, ठीक है ना, बट अगेन इट्स नॉट दैट सॉर्ट ऑफ रेड। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैं 0 1 आ रहा है, आई वांट 0 1, आई वांट 255 वाला सी। Oh my god, lots of differences, huh? Pretty annoying. Well, anyways, it's okay, no worries. हम यहाँ एक तुक्का वैल्यू लगा सकते हैं. 120 is round about 127, which is half, so it's most likely 0.45 or something. Yeah. So yeah, 0.45. That's a red. That's red for you. Or green. Ground, not green. Uh, in a ground. Or pair green. Zero point 0.45, 0.45, and save. Always save the things. Blue. Okay, let's close these things. That's it. अब हम materials वाला काम कर सकते हैं. तो ground is this guy, ठीक है. और ओके, कैमरा भी नहीं है, मैंने भी नोटिस किया. तो कैमरा, let's add camera. Right click here, or all classes. Camera. Come on, camera is not your basic. Come on. Camera actor. Good shot. You got a camera actor, or well, I can just push it there. तो ऐसे में कैमरा एक्टर मिल तो गया, लेकिन इसकी oopsie, it doesn't work. Control Shift F no longer works. So okay, how can I control this camera कि वो उस जगह आ जाए जहाँ मेरा सीन है? Is there any way to do it? Pilot. Yes. अच्छा, यहाँ से पायलट का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ से आता है पायलट का ऑप्शन. That is super weird. But anyways, पायलट का ऑप्शन तो आ रहा है ना. That's what matters at the end of the day. ठीक है. तो मैं बड़े दूर से देखना चाहता हूँ एक्चुअली इसका. Like sort of like this. ठीक है, and that's it. हमारा कैमरा सेट हो गया है. Oh shit. मैं समझा मैं निकल गया था. Okay, I have to pilot this guy again. Snap object to, okay, we have snap object to, damn it, क्या हो गया? So okay, but I can't snap object to view अगर ये view में होगा ही नहीं इधर. Okay, yes. There you go. Right click, snap object. View to object नहीं, object to view. Yes, done. ठीक है. So now it's done. Yes. अच्छा, अब what I want is कि इसका जो एंगल है वो कम हो जाए, so that it's closer. Into
दैट्स इट। ठीक है। और टाइम टू ऐड स्टफ लाइक सिलेंडर नहीं चाहिए मुझे, कैप्सूल। कैप्सूल। Yeah, anyways, let's just character is a type of font that includes the ability to walk around. ठीक है, I mean it's we want a character, right? So there you go. Okay, convert this actor into a reusable. Okay, so let's call this F2 player. Yes, definitely have to convert it. Player blueprint. Okay, so yes, it has a slightly इस तरह से लिखना चाहिए BP_player. I think ये तरीकेकार है इनका. And then yeah, why not? Make one. Control space. Oh, okay. There you go. It's up there. और ओके, और अब mesh में हमने skeletal mesh component. Oh, I don't want it to be a skeletal mesh component actually. Okay, can I remove that? No, I can't. Shabash. Right click. Okay, add कर लेते हैं mesh and that's it. Call it a day. Static mesh. And let's and capsule. Capsule नहीं है. नहीं है capsule. They have sphere, they have cube sphere. Cylinder है. Capsule नहीं है भैया. तो it's fine. No worries. Not a big deal. इसको close करते हैं, इसको save करते हैं. Let's actually remove it from here and then यहाँ से भी remove करते हैं इसको. ये weird चीज़ है. Force delete please. Thank you. अच्छा. मैं चाहता हूँ कि शेप ऐड करूँ फिर सिलेंडर, क्योंकि वी डोंट हैव द अदर ऑप्शन. और इसका स्केल सेट कर देता हूँ लॉक किए बगैर 0.5 0.5. ओ ओ ओ यस, इसमें थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है सीन इसमें. ये हाइट है. यस, दिस इज हाइट. तो 0.25 0.25 0.5 and minus 300. Oh, 300? Zero? What the heck? Minus 280, I guess. No worries. Okay. So let's put it in the middle like this. दस का स्नैप है, 5 का स्नैप हो जाए तो अच्छा है. Yes, that's pretty accurate. 275 is the way to go. ठीक है. और नाउ ये तो हो गया. या अब हमें इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा प्लेयर, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू
player blueprint, right? BP underscore player. That's another time doing the same thing, but this time it's Pakka. Okay, well, I couldn't find capsule, which is fine, I guess. कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें. Okay, that's what it is. I would like to change this to game material, white tracking, full pure white, or event graph. Okay, so nav mesh. We need a nav mesh first. But nav mesh से पहले मैं पहले 2 cubes लगाऊंगा साथ, just for testing nav mesh. ठीक है, तो कैसे लगाए जाएंगे? Well, that's not even a question to ask. Base shapes, cube, ठीक है, और इसमें रखेंगे, ऊपर करेंगे इसको पहले. ओके, बड़ी बड़े क्यूब्स हैं. 0.5, 0.25, I guess 0.5 जो भी है. 0.4 करो भैया, बस काम मुकाओ. हाँ ठीक है. और स्केल अब ठीक है, except it's in the air. Okay, directional light is definitely not helping me. अब फिर shadows नहीं आ रही. So how do you shadows कैसे ठीक करते हैं? Why are shadows not here? Shadow. Shadows तो नीचे यार. Shadow true है. Okay. I think मुझे पूछ लेना चाहिए. How to enable shadows in Unreal Engine Scalable? View engine scalability settings, shadows. Okay, view. Oh, come on, man. इतना भी नहीं करना चाहिए, हाँ? थोड़ा सा तो अच्छा बनाओ यार. I get it. ठीक है, that's probably okay. इतना तो चलता है. इसको कॉपी पेस्ट करते हैं and rotate करते हैं. Oh, not this sort of rotation. Okay, so how do you vertex snap? Damn it. Surface snap is on, लेकिन इसको यूज कैसे करना है भैया? Oh. Okay, I need to actually see that. Hold down V while using, okay. Hold down V while using the translation gizmo. Okay, it does work.
ओके ये थोड़ा सा weird है but anyway it's fine, it is fine, all good. अच्छा अब यहाँ प्लस करते हैं and let's say volumes, nav mesh bounce volume, ठीक है इतना के बड़ा है ये nav mesh bounce volume, wow that is small. Okay, and let's go down, up, down, left, right, XYZ. ठीक है तो इसको करते हैं 1000 by 1000 and that's probably good enough. ठीक है और let's build the navigation mesh. How do you build the navigation mesh? Oh, either. Okay, I think that is good to go. लेकिन okay, so how do you see Unreal? Even how to see NavMesh? How to see NavMesh? Whatever. P. Okay, P. So that's pre, and there you go. I can now see it. Wow, that's cool. Except it was a weird day. हाँ क्या हो रहा है? Okay, so NavMesh जो है, it has to that is weird. Height का मसला है. Okay, so इन दोनों का height बड़ा करना पड़ेगा. Yeah, that's it. Right. So the height was the issue. I guess ये figure configure कर सकते हैं, but I don't think we need to configure that. ठीक है. तो yes, the navigation mesh is here now. अब मैं करने लगा हूँ input click. ये है weird stuff. यार एक जो बेसिक चीज़ है जो नहीं की हुई वो है कैमरा कहाँ देख रहा है, कैमरा क्या कर रहा है, नो आइडिया. So let's fix the camera first. Okay, camera is doing a good job actually. इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 25 or maybe let's go with 40 and station थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा और स्टीप कर देते हैं ऐसे करके ऐसे. और जो आपका प्लेन है it needs to go beyond what it's already big. और जो navigation mesh है it will also go big then to no navigation mesh bounds की बात हो रही है. 2000 by 2000. ओके ये भी कम है. 400 or 400. ओ नहीं 2000 ठीक था यार. क्या हो गया मुझे?
ये बाहर को ही जा रहा है ऑलमोस्ट, हल्का फुल्का। इसको सिफर 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 करते हैं, क्या होता है? ओके, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ऊपर, एंड गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। द प्रॉब्लम इज के, आई मीन ठीक है, इसको काउंट किया है, नो वरीज। एडिट, एडिट क्या करना है? यहाँ क्लिक करें, nav modifier, दिस इज अ नेविगेशन मॉडिफायर, ठीक है। तो ये नेविगेशन मॉडिफायर क्या करता है? फेल से फलाना ठमकाना, आई थिंक इट शुड वर्क जस्ट फाइन, पता नहीं, लाइक viewport navigation mesh। ओके, सो अच्छा, अब करना है क्लिक, कि माउस क्लिक करूं तो वो उधर जाए, ठीक है ना? तो माउस क्लिक कैसे देखा जाएगा? क्लिक, okay, so we have it on clicked, even called when the is clicked while the over this component, no, नहीं 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 नहीं, on click, click, नहीं, ओके, मे बी दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? तो इसके ऊपर ही मूवमेंट होनी है, तो इसको ही ना चेंज कर लें, इसको कर लेते, कन्वर्ट दिस एक्टर इनटू रीयूजेबल ब्ला 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 ब्ला। Weird, yeah, I want this mouse position. Okay, so get mouse position on viewport, on platform. Recast. Mouse to vote. Okay, पता नहीं इसका क्या था सीन। Unreal Engine mouse to vote position. And that will help me. That will help me fix the problem. A D project. Okay, so that means this worked.
ओके सो इट डजंट हैव एनी। ओके ये मिल गया और फिर हम इसे रिकास्ट कर सकते हैं मोस्ट लाइकली। इसको थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। रिकास्ट सिंगल YouTube is not currently receiving data। like seriously YouTube के बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा। YouTube वाकई क्या मसला है YouTube का। ओके little weird stuff लेकिन ये है क्या लाइक ये प्लेन अगर मैं चाहता हूँ कि प्लेन कैप्चर हो जाए अगर मैं चाहता हूँ कि प्लेन कैप्चर हो जाए तो मुझे क्या करना होगा। well dang it अभी के लिए यार सिंपल रखते हैं मूव टू कंट्रोलर get the controller move to world location ठीक है अभी के लिए you know let's see if that works और ये तब होगा जब क्लिक माउस क्लिक okay on click actor on clicked नहीं let's click to cut the ब्रांच करना चाहिए इधर अगर ब्रांच होगी अगर वाकई सही है तो फिर just do it huh bilateral what's the problem blueprint itself is not a यार ये लो भैया हैप्पी हाँ
कंपाइल सेव, लेट्स सी कि क्या होता है क्या हो रहा है? Definitely weird stuff. Oh shit, man. It's a weird engine. It's a weird engine. It's not Unreal Engine, it's weird engine. ठीक है? क्योंकि पहली बात डन है सब कुछ. Project settings. Okay, let's make this, yaar. Okay. Uh, BP game mode. BP underscore game mode. Okay. That's the reason I don't like. Yeah, Unreal Engine. It's just जानबूझ के चवलियां मारी हुई है. इसके अंदर BP underscore shit man. I hate it. I hate it. Okay, तो पेन क्लास. Oops, ये तो कोड ही खोल दिया इसने भैया. Um, class settings. Let's convert it to pawn. Pawn. Finally, reparent. Thank you very much. I really, really highly appreciate that. और result is ouch. No things here now. और मुझे फिर से surrender ऐड करना होगा. Yeah, this is annoying. This is really, really annoying. This is next level annoying. Compile, save. Oh, at least it's preserved. At least it's totally preserved. Huh? That is good. Or that's okay. सही चले. हाँ, ओह, इसको इसको उसके अंदर सेट करना है यार. Settings, project settings, maps, default one, EP underscore. Finally we got that. और हम अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ हमारे पास प्लेयर है वहाँ हमें एक प्लेयर स्टार्ट मिल जाए. प्लेयर स्टार्ट राइट वेयर. इसकी पोजीशन जो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी, प्लेयर स्टार्ट, ये पेस्ट. ठीक है. Great, and now I can actually get rid of bb underscore pro. And अब मैं प्ले करता हूँ तो क्या होता है. एक है ये कैमरा कैमरा कहाँ से आ रहा है. ओह माय गॉड. तो ये कैमरे जो है सैड लाइफ. हाँ, क्योंकि इसकी अपनी जो चीज़ें हैं अनरियल इंजन की, दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स. ये अच्छा नहीं है बिल्डिंग गेम के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए.
हाउ टू से कि मेन कैमरा है, और यू कांट से दैट. Auto activate. Gotcha. Auto activate for player. Yeah, this is one of those quirky weird stuff. हाँ. अच्छा अब I want के player default players position पे start. I have to eject and see के कहाँ हो रहा है आपका spawn. Spawn किधर spawn हो रहा है, spawn किधर spawn हो रहा है. BP underscore. Nope. Nowhere to be found, huh? मैं तो समझा था कि this is part of default pawn class BP underscore player, और ये spawn होता है उधर जहाँ okay. Nope, not working. Shift F1. F1. Wow. Okay, super duper weird stuff's going on. Show cursor. Cursor. Okay, एक तो मेरा कैमरा ही मुझे तंग करता है, मजे की बात. Show cursor. Cursor. Dude. Uh-huh. Okay, clicking it is not doing anything. ठीक है. So does that mean कि नहीं चल रहा? Well, simple print would help me. Print hello, good enough. And I'm not seeing anything. So that means वाकई नहीं चल रहा. क्या है ये? अगर नहीं था चल रहा तो फायदा क्या?
Click. Input action. Okay, so maybe just maybe मुझे input actions में जाना चाहिए. Input. ओला ये deprecated हो गया. Enhanced input. Okay, and that is totally new. So let's say Unreal mouse click. Yes, left mouse button. Oh yes, it's just left mouse button actually. Okay, so let's एक बार फिर try करते हैं. Left mouse. Yeah. अरे यार इतना simple था. तो there you go. Done. Let's see क्या होता है. Okay, it's still not working. Yeah. क्यों नहीं चल रहा? कंसोल में तो नहीं आ रहा. Nope. Maybe, just maybe we need to connect player controller with the BP. वो नहीं connect हुआ हुआ. ऐसा कुछ होगा. Yes, I thought so. यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है. Right, and I think this should do it. Let's hope for the best. Hope for the beast. Yes, so at least something is working. Movement is not allowed. Why? Simple move failed for player controller. Movement not allowed. Movement क्यों नहीं allow कर रहा? No.
I think I should ask that too. Unreal Engine simple movement not allowed. Okay, so what does that mean? Floating pawn movement. Yeah. Okay, no worries. Floating pawn movement. Did that fix it up? ओके क्योंकि इसमें मूवमेंट डिफाइन हो रही है इसलिए और कहीं से मूवमेंट इसको मिलेगी नहीं सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ओके नाउ एटलीस्ट वी आर नॉट गेटिंग एरर्स तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव नो एरर्स मींस कि ये काम कर रहा होगा ठीक है तो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज के draw sphere oh what is that damn it draw debug draw sphere ठीक है at the location 100 equation 1 and color red and that's good enough. Let's see कि कहाँ है it's too big one radius one fill हो जाए तो अच्छा था but चलो है it's fine okay it's working though it should radius one भी बड़ा है 3.1 yep it is working the way it should फिर क्यों नहीं चल रहा so let's check it out ooh अरे यार अजीब चलो okay so go back to ओके अब तो भैया अब तो नहीं बच सकते ठीक है eject yourself in and see क्यों why they are disappearing मैं देखूंगा कैसे ओके हाउ अबाउट दिस कि मैं कैमरे को yeah exactly right so that's the problem and I think it's easy to solve कि हमने लाइन ट्रेस बाय चैनल ही कर लो कोई मसला ओके ट्रेस्ट ठीक है लाइन ट्रेस add multiply by 1000 and you place it there and that's the end ओके बड़ी तारें आ चुकी हैं और ऑलरेडी गंदा हो गया कोड branch so now start world location and
Okay, I just have to see on the internet कि क्या मसला है. All right, let's ask this guy. नहीं छोड़ो मैं ChatGPT से अनरियल इंजन का पूछना काफ़ी अजीब है. क्यों नहीं चला बस. शुड वर्क. वर्ल्ड लोकेशन जो भी है उसमें 1000 प्लस करके मतलब मल्टीप्लाई किया पहले इससे 1000 से और फिर उसको ऐड कर दिया वर्ल्ड लोकेशन के अंदर कि जो एंड आपकी लोकेशन है. They should have solved it, but they didn't. Or point wait that's cool. अच्छा तो इसमें से हमें चाहिए लोकेशन. सेट. ओके वेट अ सेकंड. इसको यहाँ नहीं स्प्लिट कर सकते. यस कर सकते हैं. और आउट हिट लोकेशन या इवन इम्पैक्ट पॉइंट नॉट अ बिग डील. That's it. That should do the job. Not doing anything. I think we should just remove that, this, and go directly. यार ये पूरा किया नहीं अंदर तक. It means 1000 is too small. 1000 is damn so small. Let's tell it to 1 lakh. 1 lakh तो बड़ा है भैया. 1 lakh तो बड़ा है. Come on. Oh yes, that's working. Perfect. It's way too fast. Way too fast. So इसको करें divide by 10. Everything we divide by 10. And that's it. Click, click, click.
और अभी बहुत तेज है। डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, 0.8। यार what is wrong with this? 1.2, 4, 8। बहुत ही लगता है छोटा बना दिया है, कुछ हो ही नहीं रहा लगता है। Am I changing something? कुछ मैं चेंज कर भी रहा हूँ कि नहीं? This is the smallest thing. और कितना छोटा करूँ इनको? ओके अब आई थिंक हमें डीबग लॉग नहीं चाहिए ना, हमें इसकी ज़रूरत है। नन। इतना तेज क्यों है ये? Are you seriously kidding me? कहाँ से हो रहा है सिंपल मूव? मूव टू।
Oh, dang it. Speed कहाँ से चेंज होती है यार? This is ridiculous इंजन कसम खुदा की। पता नहीं क्या चावल इंजन है यार। स्पीड स्पीड इसको कम करते हैं कुछ नहीं होता। एंड nowhere आई मीन कैसा प्रॉब्लम है यार? आई स्वेयर टू गॉड ये स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है? 1000 वो लैब बिल्कुल ही मुक गई। This is ridiculous. Nope, it's stopped working immediately. Oof, इतनी गंदी मूवमेंट है। I don't know why the hell it is doing this. Okay. Well. Let me just see quickly. Game Jam वालों ने कुछ किया है? हाँ. Okay. Game Jam guys. Good job. Right. Movements, spawn movements, decreasing speed. Is there something like that? Okay, fair. So divide by 1000. Divide by 1000. Divide by 1000. Yeah, and yeah. To get compile, save, play. Yes, now it's working. Shukar. So now I just say multiple 10. Multiple 10. Multiple 10. I hope के काफी होगी speed.
Come on, let's. Oh, it's still so slow, the hands, you know. And 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 come on. Yeah, not bad, huh? ठीक है, लेकिन let's multiply it by 2. 2, maybe one more multiplication, wouldn't mind. moment तो चाहिए लेकिन बहुत कम ही. There you go. Save, compile, saving. Yep, that is good. Navigation mesh is working. थोड़ा सा नीचे गया हुआ है and it's actually a pretty easy fix. All we have to do is okay, जो गोल है हम ऐसा करते हैं कि begin play में एक float बनाते हैं. Let's call this float and z pose height, and you can say के height set height जो भी आपकी transform ओहो character transform ऐसे थोड़ी ना होता है. character transform hey एक तो मैं भी ना character position लो सीधी सीधी location position whatever इसको split करो इसमें से z हमें चाहिए. That's what we need here. That's it. और फिर जब हमने out hit location दी तो well we need to split that again. Come on, can you split? No, it can't split. To have and miss. We can just split like that. Oh, come on. Vector 3. Break, not split. Okay. ये हो गया. And then vector 3. Vector set, right? So x नहीं vector इसको मैं हटाऊँ ना ज़रा. Vector make vector. Okay, break and make. So x, y, and then we need a height. Okay, and then that's what we will gonna use here. And hopefully this will fix the problem, height problem. Oh, no, it didn't. क्यों नहीं किया fix? क्योंकि ये है get actor location जो कि root का ले रहा है c. और c दी भी है root की. फिर क्या मसला ही? I mean, the problem is that NavMesh doesn't care. NavMesh क्यों care करेगा इस चीज़ की, right? तो solution is कि इस सिलेंडर को ऊपर ले जाओ by 50. We'll fix it. Let's hope for the best. Yes, there you go. Problem solved. I think इसका मतलब ये है कि मुझे हाइट वाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी. just keep it simple. और इसको यहाँ से रिमूव कर दो. Click, click. Out hit is a variable. ये कहाँ से आया out hit? Let's move it. Okay, yo. Oh, इसकी height बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा height. Let's set it to 40. Okay. है अभी भी ज़्यादा है. No, let's set it to 30. यार ठीक है. ठीक है. So now we have a very good
वेरी वेरी गुड नेविगेशन मैच, और ये मज़े का, यूनिटी से ज़्यादा मज़े का चल रहा है ये कंपेयर टू द अदर वन. Yes, that's pretty decent. We can move the character. जबरदस्त. अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? कैमरा मूवमेंट. ये रहा कैमरा एक्टर. And let's convert this into PP camera. Yep, let's do it. Or no, that's there's a problem. Oops, एक तो ये नहीं था करना. क्लास सेटिंग के अंदर कैमरा कैमरा एक्टर इज अ कैमरा विewport है ना. ठीक है. कैमरा पॉन नाम की कोई चीज़ नहीं है इसका मतलब. ठीक है, अभी यही होगा. ऑलराइट, तो I think this should do the job. अच्छा, अब कैमरे को मूव करना है. कैसे करोगे मूव कैमरे को? इनपुट एक्शन. मसले बहुत सारे हैं इसके साथ. Auto activate for player 0. Yeah, great. That is good. जो कैमरा है, आई थिंक हमें नहीं चाहिए ये. Good. ऐसा करते हैं, फिर से बनाते हैं कैमरा. कैमरा 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 एक्टर. और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. ठीक है, और इसको डिलीट मारते हैं. ये मैंने गलती की है. आई थिंक मुझे नहीं बनाना चाहिए कैमरा एक्टर, क्योंकि द प्रॉब्लम इज के प्लेयर की यहाँ जो कंट्रोल्स हैं ना, इस तरह नहीं है. ठीक है, तो कंट्रोल्स आर वियर्ड. यहाँ मैं प्लेयर से ही कंट्रोल करता हूँ कैमरे को. ठीक है, तो यहाँ प्लस करता हूँ और यहाँ कहता हूँ कि भैया ये है. हम एक एक्टर को मूव करना चाहेंगे. एक्टर एक्टर. ठीक है, और इस एक्टर का नाम कहेंगे कैमरा. कैमरा एक्टर. दैट्स गोना बी एन एक्सपोज्ड थिंग. और फिर क्या? इनपुट एक्शन. कौन सा इनपुट एक्शन? W EW ये रहा. ठीक है ना. WAST. इस तरह से मैं एक एक की पकड़ूंगा, यानी कि ग्रेट जॉब है. सो मसला है कि अनरियल ने अभी डेप्रिकेट कर दिया है वो जो पुराना इनका इनपुट सिस्टम था. मुझे नई वाला आता नहीं अनरियल इंजन का. बट व्हाट वी कैन डू इज enhanced input. Okay. How does that work? Come on, just tell me.
Okay, great. That is actually pretty decent. Okay, अब बनाते हैं भैया, बस बहुत हो गया. Space, right click, input. Input action. Let's call this IA underscore uh, horizontal. IA horizontal. Right over it. Value type. Bool. No, it's gonna be okay. There's also access 2D, which is what I would like it to be. So let's actually rename it to IA camera movement. Yeah, and that's much better. या फिर ओहो तुम F2 IA move, yeah, that's good. तो यहाँ it's gonna be this input settings trigger क्या, oh good, ठीक है. Modifier क्या, okay, modifier is definitely not what we want. Hold. Metadata. Okay, wait a second. No, nothing. ये बना दिया मैंने, इसको क्या चार डालना है. Weird. चलो, that's cool. IA move. So that means we need to have this thing called input context IMZ underscore, I don't know what to call this, है क्या, mapping. इसके अंदर क्या डालें हम, IA move. Oh yes, the keyboard. So keyboard. Okay, this is tough, man. W.
और मुझे थोड़ा सा देख लेना चाहिए है क्या ये। अदरवाइज आई डोंट थिंक आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। सी और ई। विजुअल नेगेट नेगेट। यार इतने बहुत ही बोंगा बना दिया कसम से। आह। विजुअल नेगेट नेगेट। ओ। आ। यप देयर यू गो। हाँ मुझे देखना ही पड़ेगा मुसलसल। WASD। W is Swizzle, S is negate Swizzle. Swizzle, negate Swizzle, okay? Negate. Oh yeah. How do you do a negate Swizzle? By दोनों चीजें ऐड करके, okay? Negate Swizzle. WS और A क्या है? A is negate and T is not. Okay. Mm-hmm. T is. Oh. T is done. Yeah, done. कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। Okay, this is so damn weird यार। It's so weird. इसको सेव किया। Not a fan of this technique. IMC default, right? And that's it. So अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? Enhanced input IA move. IA. Okay. There's this thing called IA move. अच्छा, by the way, this thing मैंने कहा कि होल्ड करे। Coded action combo hold down. Okay, down is the way to go, right? इसको सेव करो, close and save again.
actor location, ठीक है, set actor location, get actor location. Okay, we need a float, camera speed, which should be by default 100 at least, or action value, ठीक है. Break it and oh yes, इसको ही break करते हैं. Add multiply. Actually, the multiplication should happen early on. Multiply by multiply camera speed. कैमरा स्पीड के बाद ये, ठीक है, तो कैमरे की स्पीड मल्टीप्लाई हुई और फिर उसको ब्रेक किया. And we should multiply it also by फिर से delta time delta no ये, ठीक है, and break y. Y and make a vector x, y, and z. Put it here. Triggered and ongoing. Just the same thing. Save, compile, save, and let's hope for the best. ये चले, नहीं चला तो नहीं चला, क्या कह सकते. ओ मैंने कैमरा नहीं सेट किया, राइट. सो ओ ओ यार, क्या है ये. Layer 0 split. Okay, there you go. ठीक है, तो camera movement, it's not working. पर से एक्सपोज नहीं था कि इसको.
The Unreal Engine is insane one. से उफ, क्या ही यार, ये इंजन दिमाग खराब करती है इसने. डैम इट. तो यार 25. let's still do our best कि कोई solution मिल जाए. ओके मैं तो आई गेस थक गया हूँ. आई एम नॉट इवन श्योर क्या शुद्ध 3 घंटे की स्ट्रीम हो गई है. और ये अनरियल इंजन इज द जस्ट अनरियल इंजन. Damn it, so hard, so damn hard to do one thing. क्या है यार ये खुदा की कसम, ये क्या लेकर आए इनहैंस्ड. इसको मैं कैसे चलाऊं. व्हाट, क्या क्या मुझे ऑन करना पड़ेगा पीछे से. If, so terrible, terrible engine. I hate it. पता नहीं लोग कैसे इसको ओके समझते हैं. ये मेरे लिए ओके नहीं है ये इंजन भैया. ये बात तो कंफर्म है, कंफर्म. इस पे मैं इंडी गेम नहीं बनाने वाला. सॉरी भाई. बस ना इंडी गेम इंजन. दैट्स ट्रिपल ए होगा लेकिन इस ट्रिपल ए का मैं चार डालूँ जिसमें accessibility नहीं है. You can't even set inputs like that. हाँ कार्ड में जाए एक मिनट. तो खैर ये इनहांस इनपुट जो है इसको तो मैं कर रहा हूँ रद्द. आई डोंट नो होगा. आई थिंक कोई मैंने गलती की है मामूली सी. बट स्टिल आई हेटेड इट जो भी है. टेरिबल एक्सपीरियंस, वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस. तो खैर अब लेट्स गो विद W W input. और भाई इससे अच्छा मैं एक एक लेटर का इसी तरह कर लूँ. दैट वुड बी बेटर. S A T W S A D W S.
ये मैंने बहुत गलत तरीके से किया है, एब्सोल्युटली टेरिबल। ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अब ऑल आई नीड टू डू इज टू सेट द मूवमेंट, और मूवमेंट शुड बी इजी टू सेट। तो बिंगो, गए सारा कोड, और यहाँ वेट, यस। प्रेस है तो ये 1 है। So now it at least works। करे बेशक वर्जन इसका वो नहीं है जो होना चाहिए था, बट hey, not bad, huh? WSD is working। कितना आसान था ये। Damn, it is so hard। तो
भी इसमें कुछ इश्यूज हैं. The moment we release it, it set it to 0, which is not how it should be.
Okay, so another problem that come up. Okay, three problems है. Damn it. Z and this is a terrible way to do it. Oh my god, I hate blueprints. Blueprints क्यों भाई क्यों? अब ये उसी तरह चलेगा लिस्ट. हाँ, yes, perfect. हाँ, perfect. Finally, at least ये ठीक हो गया. अभी भी जो इसकी मूवमेंट है उसका असर नहीं है.
See, left right is fine, but forward backward is not fine. Definitely not fine. Oh, ये y नहीं z में करना था. Dang it. Okay, that's so. Yes, that's what. इसका उल्टा है x axis. A is left, so A में minus होना चाहिए ना D. Well, we can also do this D and A. That should fix it. Yes, finally हो गया. And that's it. That's it. क्या टाइम हो गया? 3 बज गए हैं भाई. 3 बज गए हैं. 3 घंटे 25 मिनट हो गए हैं. That's an extremely long stream. Unreal Engine नहीं सारा टाइम लिया. Unreal Engine is definitely not easy to learn. अजीब सा इंजन है ये. और yes, and the spaghettis as always. Love these spaghettis. मैं the thing is that Unreal Engine unintended तरीके से काम करता. Unintended, which has repercussions, if that makes sense. And I don't like working in Unreal Engine for sure. Guaranteed बात है भैया. कोई दूसरी राह है नहीं. अजीब सा इंजन है भाई. अजीब सा. It's not indie, if that makes sense. But still, like, I was able to do things. ऐसी बात भी नहीं है. लेकिन अपने तरीके से चीज़ें की है. Not the intended way, I guess. Still not bad. So yeah, there you go. And there's this weird thing. सारा कोड इधर ही है. It is good. ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. But still not really satisfied by how little progress has happened over so much time. अभी पेयर्स को कलेक्ट करना है. आई गेस वो अगली बारी में ही करेंगे. बट स्टिल रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इट वाज अ डिसेंट प्रोग्रेस. सीखने को मिला है. ठीक है. तो यू नो आई जस्ट वांट साइलेंट यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ. आई जस्ट वांट अ साइलेंट थिंग. ठीक हो गया गाइस. That's our experience with Unreal Engine, and well, we got this running. और यूनिटी के अंदर स्फीयर भी पकड़ते हैं. नंबर भी बढ़ता है. ऑब्वियसली यूनिटी मुझे अच्छा आता है इसलिए. तो that's good. Save selected. Yeah, save it. And I think I should call it a day. आई होप कि अच्छी लगी होगी स्ट्रीम. इतने बजे तक तो कोई नहीं देख रहा होगा मेरी स्ट्रीम. बट इट्स फाइनली डन. ओके, दैट्स इट. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें. मिलते हैं अगली स्ट्रीम में. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय. शबा खैर.